त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Surya Narayana, the symbol of energy, vitality, and prana, the very essence of life. Install him at your Bhumadhya, offer pranam to him, and take the sankalp of increased creativity, improved capabilities, higher wisdom, and a better discrimination. With this sankalpa, we shall chant the Gayatri mantra 11 times. I shall chant the first mantra. You will join in for the next 10 in the same rhythm, speed, and intonation. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Ma Durga, Jagat Janani. Invite her and install her in your heart center. Offer pranam to her and take the sankalpa of removal of difficulties, distresses, hardships, and despairs, and to replace them with hope, enthusiasm, energy,
focus, dedication, hard work, perseverance, and contentment. With this Sankalpa, we shall chant the Durga Dwatrincham Namamala 3 times altogether. ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणि दुर्गमच्छेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनि दुर्गतोद्धारिणि दुर्गनिहन्त्रि दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणि दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुर संहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणि दुर्गमच्छेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनि दुर्गतोद्धारिणि दुर्गनिहन्त्रि दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणि दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुर संहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ॐ दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणि दुर्गमच्छेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनि दुर्गतोद्धारिणि दुर्गनिहन्त्रि दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुर संहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम 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 Hari Om. That's it. For a few moments, become aware of the sankalpas we have taken and their manifestation within us. Hari Om. That's it. Today being Saturday, we shall be chanting the Shri Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम। Keeping your eyes closed. Hari Om Tat Sat. Next, let us connect to the Pancha Mahabhutas with a short meditative practice on their yantras. The entire creation derives itself from these five primordial elements: Prithvi,
Jala, Agni, Vayu, Akash. From the largest galaxies to the smallest subatomic particles in the world external as well as world internal. These five form the basis. By connecting with them, nourishing, nurturing, purifying them, strengthening them, we are able to trigger a change which will remove the imbalance, remove the impurities, and re-establish purity, harmony, balance in nature, external as well as internal. To begin, become aware of the Prithvi Tattva, rigid, hard, solid, clear-cut shape, size and form, resists changes, but is the support basis on which movement, existence take place, perceptible to all the five senses. Prithvi Tattva. Try and connect the Prithvi Tattva within, around, and beyond the internal, the planetary, and the cosmic or galactic. For this, we shall gaze at the yantra and chant the Bija mantra. Lam. Gently open your eyes, gaze at the yantra in front of you. Lam, 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 lam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Lam, 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 lam. Open your eyes, gaze at the yantra and chant Lam, 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 lam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Lam, 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 lam. Open your eyes, gaze at the image and chant Lam, 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 lam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Lam, 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 lam. To connect with the Prithvi Tattva deeper, we shall chant its Gayatri 5 times. ॐ पृथिवीदेव्यै च विद्महे सहस्रमूर्त्यै च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात् ॐ पृथिवीदेव्यै च विद्महे सहस्रमूर्त्यै च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात् ॐ पृथिवीदेव्यै च विद्महे सहस्रमूर्त्यै च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात् ॐ पृथिवीदेव्यै च विद्महे सहस्रमूर्त्यै च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात् ॐ पृथिवीदेव्यै च विद्महे सहस्रमूर्त्यै च धीमहि तन्नो मही प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Next, Jala Tattva. Fluid has no shape, size or form, takes the size or form of the vessel holding it, perceptible to all the five senses, the fountain source of nourishment of life.
To connect to the Jala Tattva, gently open your eyes, gaze at the yantra in front of you, and chant the Bija mantra Vam. Vam, 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 Vam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Vam, 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 Vam. Open your eyes, gaze at the image, and chant Vam, 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 Vam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Vam, 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 Vam. Open your eyes, gaze at the image, and chant Vam, 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 Vam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Vam, 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 Vam. To connect to the Jala Tattva, we shall chant the Jala Tattva Gayatri 5 times. ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो अम्बुः प्रचोदयात् 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Next, Agni Tattva. Midway between all the 5 tattvas. It has the visible tattvas Prithvi and Jal on one side and invisible tattvas Vayu and Akash on the other. It itself is partially visible, partially invisible. It is transformative in nature. It has the ability to transform visible, manifest into invisible, unmanifest, subtle, and has the potential, possibility to transform the unmanifest into the manifest. To connect to Agni Tattva, gently open your eyes, gaze at the yantra, and chant the Bija mantra Ram. Ram, 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 Ram. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Ram, 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 Ram. Open your eyes, gaze at the image, and chant Ram, 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 Ram. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Ram, 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 Ram. Open your eyes, gaze at the image, and chant Ram, 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 Ram,
ram, ram, ram. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant ram, 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 ram. To connect deeper, we shall chant the Agni Tattva Gayatri 5 times. ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, Vayu Tattva. Not visible to the eyes, but perceptible to the other senses. Has the ability to move and make others move. It has a drying effect on items. Try to connect the Vayu Tattva, internal, planetary, galactic. To do this, gently open your eyes, gaze at the yantra in front of you, chant the Bija mantra Yam. Yam, 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 yam. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Yam, 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 yam. Open your eyes, gaze at the image and chant Yum, 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 yum. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant Yum, 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 yum. Open your eyes, gaze at the image and chant Yum, 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 yum. Close your eyes, gaze at the after image and chant Yum, 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 yum. To connect deeper, we shall chant the Vayu Tattva Gayatri 5 times. ॐ जगत्प्राणाय विद्महे ध्वजहस्ताय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Finally, Akasha Tattva, hardly perceptible to the senses, but it exists, and it is that space in which the other creations can manifest. Without Akash,
There's no space for the manifestation of these four tattvas. Try to connect to the Akasha Tattva within, around, beyond. Gently open your eyes, gaze at the yantra in front of you, chant the Bija mantra hum. Hum, 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 hum. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant hum, 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 hum. Open your eyes, gaze at the image and chant hum, 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 hum. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant hum, 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 hum. Open your eyes, gaze at the image, chant hum, 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 hum. Close your eyes, gaze at the after image, mentally chant hum, 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 hum. To connect to the Akasha Tattva deeper, we shall chant Akasha Tattva Gayatri 5 times. ॐ आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात् ॐ आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात् ॐ आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात् ॐ आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात् ॐ आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् for a few moments try and become aware of all these 5 tattvas simultaneously. Prithvi, Jala, Agni, Vayu, Akash. Become aware of them in the internal dimension, on the planetary dimension, on the galactic dimension. And experience that the mantra chanting we have done is triggering a change in purifying, nourishing, nurturing, strengthening each of these tattvas, removing all impurities, dross, thereby removing the impurities, disturbances in the entire creation, re-establishing harmony, balance, experience the diminishing of the environmental disasters, the imbalance being removed and balance being re-established. Hari Om Tat Sat.
now, we shall move ahead into the chantings dedicated to Ma as a part of our Navratri Aradhana. Bring to your mind the image of Ma, Jagat Janani. Remove all the gaps, insulations between us and the divine. And to be able to do this better, to connect to Ma better, we shall be continuing with the Navratri Aradhana. To begin with, Saundarya Lahari. Today, we shall chant from verse 56 to 66. Some put mantras in the beginning and at the end. The Bija mantras to begin. Prarthana Namaste Namaste to conclude. Those of you who are able to should come in Vajrasana and bring your hands in Avahaniya Mudra. Meditate on the transcendental form of Ma. Meditate upon Bhagavad Pad, Bhagwan Bhashyakar, Acharya Shankar, the composer of this divine chantings, offering pranam to them, taking their blessings. Let us begin. Om Aim Om Hrim Om Shrim Om Krim Trayanam Devanam Trigunajanithanam Api Shive Bhavet Puja Puja Tava Charanayorya Virachita Tatha Hi Tvatpadot Vahanamणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटा निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयत परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशाद्राधेयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हि मकर अरालं ते पाली युगलमगराजन्यतनये न केषामादत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसत् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानधिषणाम् सुरद्गण्डाभोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलम् चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम् यमारुह्यद्रुह्यद्यवनिरथमर्केन्दुचरणम् महावीरो मार प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्ति अमृतलहरी कौशलहरी
पिबन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलम् चमत्कारश्लाघाचलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते असौ नासावंशतुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीय फलतु फलमस्माकमुचितम् वहत्यन्तर्मुक्ता शिशिरशरनिःश्वासघटिता समृद्ध्यायस्तासाम् बहिरपि च मुक्ता मणिधर प्रकृत्या रक्ताया तव सुदतिदन्तच्छदरुचे प्रवक्ष्ये सादृश्यम् जनयतु फलं विद्रुमलता क्व बिम्बं दृग्बिम्ब प्रतिफलनरागादरुणितम् तुलामध्यारूढुम् कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालम् तव च वदनचन्द्रस्य पिबताम् चकोराणामासीत् अतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशो अमृतलहरीमम्लरुचय पिबन्ति स्वच्छन्दम् निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया अविश्रान्तं पत्यु गुणगणकथाम्रेडनजडा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनाया स्फटिकदृशच्छच्छविमयी सरस्वत्या मूर्ति परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्त्रैकवचिभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहरनिर्माल्यविमुखैः विरिञ्चीन्द्रोपेन्द्रैः शशिशिशिरकर्पूरधवला विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूलशकला विपञ्या गायन्ती विविधमपदानं पशुपते त्वयारब्धे वक्तुं स्खलितवचसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतम् त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन्मुकुलितकरोत्तं समुकुटा नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य हरि ओम तत्सत and now we shall
move ahead with Devi Aradhana with the Siddha Kunjika Stotram. शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापशुभो भवेत् न कवचं नार्कलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वायोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हौं सं लं क्षं फट् स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निःशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते न मन्त्ररूपिणी धाम धीं धूम धुर्जटे पत्नी वां विं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्बनादिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॐ इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् सम्पूर्णम्. For a few moments, meditate on the Trigunatmika form of Devi. The Trigunatmika form of Devi, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Try and meditate on each of them as I chant the Dhyana mantra of each. ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौच्छयिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ श्री महालक्ष्मी ध्यानम्
ॐ अक्षस्रक्परशुगदेषु कुलिशं पद्मं धनुःकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सुरौजो भवाम्। ॐ महासरस्वती ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः। ॐ फलं पृथिव्यात्मकं गन्धं कल्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः। ॐ हं वायव्यात्मकं धूपम् आघ्रापयामि। रम् अग्न्यात्मकं दीपं कल्पयामि। वम् अमृतात्मकम् अमृतमयमहानैवेद्यं कल्पयामि। सं सर्वात्मकं सर्वोपचारपूजां संकल्पयामि। नमः। Now we shall chant the Saptashloki Durga. 7 verses from the Durga Saptashloki pulled out and compiled to represent the entire Durga Saptashloki, the Durga Saptashati. शिव उवाच देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। दिव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेन आप्यं वास्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुपादीनि छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं रोगानशेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं ॐ दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा।
become aware of the presence of Ma. And just as the baby, the child, is overjoyed at the sight of its mother, we also are filled with joy and happiness. Experience the communion with Ma. And we shall now worship this divine form of Ma with the chanting of the Tantroktam Devi Suktam. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै दिव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थितां जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय। अटल छत्र की जय। साके दरबार की जय। जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर keeping your eyes closed for a few moments, remain connected with Ma. Feel His energy enveloping us, creating a kavacham, a shield around us, so that the connection with Ma, which is tender, can slowly blossom, become stronger. Observe how there is a quantitative and qualitative shift between
the earlier and current state. The negativities have fallen away, giving rise to hopes, aspirations, ambitions, wants, desires. Try and remain aware of these. We are in the Rajas aspect of Navaratri. Observe how the desires, wants, hopes, aspirations, they push the mind here and there, instigating it into action. Do not block this. Just become aware this is happening. Feel the presence of Ma Lakshmi, the form of Ma Lakshmi, splendor, resources, which allow us for fulfillment of the desires. Kamana Purti. In the beginning, the Kamanas are tinged with the tamasic aspect because we have come from there. But slowly, the tamas is flowing away, getting transformed, and there is increasing purity taking place. The big fat ego comes in between, and based on our ego, our perceptions change, activating desires. Keep on observing this. And when this ego gets bloated, gets corrupted, then it takes an ugly form, black, like a buffalo, harmful, like a demon. It becomes Mahishasura. Invite Mahalakshmi, the Mahishasura Mardini, the destroyer of the demon Mahishasura, ego. That egodectomy may happen within us. Maintaining this communication with Ma and his bhav within, we shall conclude with Om and Shanti Path. Inhale deeply. Om. 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 Asato ma sadgamaya
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Hands in pranam mudra. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरिः ओम हरि ओम तत्सत Gently rub your palms against each other. Place them on the closed eyes. Experience the warmth radiating from your palms to your eyes, to your brain, to the whole body. And then gently move the palms away. Open your eyes. Hari Om. Sat. Namo Narayan. नमो Jai नारायण Om. स्वामी नमो नारायण स्वामी जी नमो नारायण स्वामी नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी नमो नारायण नमो स्वामी नारायण स्वामी। नमो नारायण Namo Narayan. So now we are by days. Yesterday was the midday, but by the Navratri schedule, today is the midday. The when you are going, the midpoint is the most important, because it is from the midpoint that we can know if are we going to go on a higher loop or are we going to slide down. That is what we have to. In our life, we begin with tamas, come up into rajas, and then we get so caught up in the rajas, the desires, because the activities are being instigated by the base desires which pull us down back into tamas. So therefore, then there is that bell-shaped curve. There is a fall which comes again. But it is at this point that we have an option. Instead of descending, we can move into a higher spiral. Will we be able to? Or will we fall back into the same quagmire? That is what we have to decide. Because if we want to fall back into the quagmire, then there's no need for any aradhana to be done. The world is good enough for that. But if we want to purify ourselves so that through the karmas, because you see, this is midway, this is not the culmination of rajas. This is midway between tamas and rajas. So it is also the midday of the rajasic 3 days. And that is important, because from here the karmas become purified, and they go take us higher and higher and higher and higher. It is the karmas which will take us. We are still not that powerful or that purified, like say Ramana Maharshi Maharaj, who could just go in and experience the divine. We are not that type. If we were that type, things would have happened on their own. The very fact that it has not happened means that we are still not there. Of course, we have the opportunity, the potential is there in every one of us. We are not there as yet.
We are still caterpillars. We are not butterflies. How can we convert this caterpillar into a butterfly? That is only when the Mahishasur Mardanam takes place. And what is this Mahishasura? Mahishasur represents the bloated ego. Ego in itself is essential because it is your self-identity. If you do that I end over here, you see the fire and you put the hand in the fire, you are going to burn. You are going to burn. But just because I should not burn, so therefore I start doing things which harm others, which harm the general society, and therefore in the end harms me also in the long run. That is again not good. That is the sign of a inappropriately developed ego. Ego has developed, but not towards our highest development. It pulls us down, limits us. No, that should not happen. It should allow us to go higher and higher, because eventually we have to transcend this ego also. Eventually, not right now, not possible also. So, what has to be done? Purification of our karmas. Rajas is full of karmas, and karmas are instigated by desires. If we have to purify the karmas, obviously it goes without saying that we have to purify our desires too. That purification has to happen. It can't be an imposition. It should happen from within. That is the transformation from a caterpillar to a butterfly. And we are now at that point where we have to consciously take the further step towards this purification. And today, let us maintain the awareness on this aspect. How is it my desires trigger my actions? And what is the nature of my desire? If I am taking tobacco, initially I get lot of joy and happiness. But later on, the same tobacco creates problems for me, creates cancer and so many other problems. So is tobacco good or bad? In the long run, in all runs, tobacco is bad. In the same way, how do my desires stimulate actions? I need to transform them. Shanaihi, shanaihi. So for that, you need to become aware of it. Don't block things, but become aware. This is how it is happening. Just now, if we try to block, we will suppress, and suppressions create more problems. No, we have to transform it. That is the whole idea. We are not pushing ourselves from tamas into rajas and rajas into sattva. No, there is a gentle, gradual blossoming which takes place, for which awareness is very important. So, it is with this that we conclude today, and we'll meet again tomorrow. Even if it is a Sunday, we will be meeting because this is the Navratri hour. Hari Om Tat Sat. Namo Narayan. Namo Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan Swamiji.